Yes, so before that, as usual, what do? We tell you about the platform. So what is this platform Swiflearn all about? And why does it say that we try harder? Yes, we try harder with the students so that they can perform good and achieve their dreams. How do we do that? Just relax. I'm here to tell you. All right, so here we go with the first point, that the class is 100% live and interactive. So by saying that, right now I'm live with you students, isn't it? Yes, I can see you all there. Hi everyone, give me your names, say hi and put on your names. All right, so when I am live here, so I can talk to you. If you have any doubt, you can write in the chat box and I am here to solve that. Right, but what happened to the students which are not present right now, जिनको ये नहीं पता कि मैम यहाँ पर अभी है, तो उनका क्या करें बताओ? उनको तो प्रॉब्लम आएगी और वो पूछ भी नहीं पाएंगे, मैम तो पूरा दिन नहीं होती है ना. सो फॉर दोज स्टूडेंट्स जिसके लिए मैम यहाँ पे नहीं है, अगर वो ये डाउट्स पूछना चाहते हैं, तो दिस प्लेटफॉर्म ऑफर्स 100% लाइव क्लासेस. सो देयर इज नो प्री रिकॉर्डेड सेशन. तो ऐसा रिकॉर्डेड सेशन जैसे अभी आप बाद में देखोगे जिन्होंने यहाँ लाइव अटेंड नहीं किया था, वैसा इस प्लेटफॉर्म स्विफ्टलर्न पे नहीं होता. यहाँ पे टीचर 100% लाइव रहती है और वहाँ पे बच्चे होते हैं जिनसे वो बातें करती है और ये समझने की कोशिश करती है किसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है एंड वीक पॉइंट्स क्या है. राइट, अब स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स, अब मुझे ये बताओ, जनरल से एक ग्रुप में अगर 50 बच्चे हों या 30 बच्चे हों, तो मैं हर एक का स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट बता पाऊंगी? जनरली तो नहीं बता पाऊंगी ना. किसी ने आंसर दिया, किसी ने कभी नहीं दिया. अब ऐसा तो नहीं है जो आंसर नहीं दे रहा तो उसको समझ नहीं आ रहा या उसको ये आता नहीं है, मे बी वो शाय है ना, वो सबके सामने नहीं बोलना चाहता. तो ये वाला मैटर भी ये प्लेटफॉर्म ध्यान रखता है. ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म में हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम ऑफ 6 स्टूडेंट्स रखते हैं बैच में. ठीक है, तो एक बैच में 6 स्टूडेंट्स ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते. तो वो आपस में भी फ्रेंड्स बन जाते हैं, है ना. और जब हम उसके बाद फ्रेंड्स के अंदर पढ़ाई करते हैं तो मज़ा भी आता है और साथ में हमें कोई डाउट होता है तो हम डायरेक्टली पूछ भी देते हैं. ऐसा होता है ना. फ्रेंड्स के बीच में कुछ डर नहीं लगता, ये भी नहीं लगता कि ये सोचेगा क्या, वो जो हमारे दिमाग में आता है वो भी हट जाता है ना. तो इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ 6 स्टूडेंट्स का बैच रखते हैं, जिससे कि टीचर के लिए भी ईजी है कि वो फर्स्ट क्लास ही जो होती है उसमें बता सकती है कि ये बच्चा अच्छा है या नहीं, और अगर इसके अंदर कोई वीक पॉइंट है तो उसको ऊपर कैसे मैंने वर्क करना है और उसको कैसे उसका जो वीकर पॉइंट है उसको उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है. ठीक है ना. तो इसलिए यहाँ पे टीचर का भी काम इजीली हो जाता है. नॉट ओनली दैट, देयर इज अकेडमिक मेंटर टीम. तो एक टीम है जो आपका पूरा ट्रैक रखती है. तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ आना है, क्लास अटेंड करनी है, क्लास वर्क करना है, होमवर्क करना है, बस आपका मैटर सॉल्व, जो आप बेसिक करते हो. बट ये टीम क्या करती है, इनका काम साथ में हो जाता है. जिस दिन आप आते हो वो आपका उसी दिन का क्लास का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करती है. उसी दिन आपका होमवर्क जो आप करते हो, कैसे कर रहे हो, टाइम से कर रहे हो नहीं कर रहे, और एक क्वेश्चन में कितना टाइम ले रहे हो, वो तक वो ट्रैक करती है. सी, अगर हम किसी और प्लेटफॉर्म की बात करें या फिर स्कूल की भी बात करें, हम क्वेश्चन जब मैम देती है होमवर्क करके चले जाते हैं. अब मैम को ये तो पता है कि आपने सॉल्व कर लिया, बट उनको ये पता चलता है कि आपने कितनी देर में किया नहीं ना, कितने कॉन्फिडेंट थे, या मुझे ये टॉपिक दोबारा रिवाइज करना चाहिए या नहीं. नहीं, क्योंकि हमें वो टाइम नहीं पता चलता. बट ये प्लेटफॉर्म, स्विफ्टलर्न प्लेटफॉर्म, वो भी बहुत ईजी कर लेता है बच्चों के लिए. कैसे? जो सी चीज आती है उसको तो हम फटाफट कर लेते हैं, करते हैं ना, जल्दी से सॉल्व करके आंसर देते हैं, मैम ये तो हमें आता है. और जहाँ पर हमें आता भी होता है बट हम कहीं स्टक हो जाते हैं, तो वो जो स्टकिंग जो हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट टाइम ले लेता है ना, वो पॉइंट ये टीम हाईलाइट कर देती है टीचर्स के लिए. अब टीचर को ये तो पता चल जाता है कि इसको आता है, इसने सॉल्व तो कर लिया बट कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लिया, तो हम उस बच्चे पे उस क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं. इससे हम उस बच्चे से पूछते हैं कि आप क्या प्रॉब्लम थी उस टाइम पे, आपको क्या चीज़ क्या माइंड में नहीं आई, तो बताओ ये चीज़ें कहीं मिलती हैं आपको? नहीं ना. That is why this platform is known as India sincere platform, जहाँ पे पढ़ाई की वैल्यू करी जाती है. आपका हर एक मिनट यहाँ पे वैल्यूएबल है. जैसे ही आप 1 मिनट भी एक्स्ट्रा देते हो तो टीचर को पता चल जाता है कि कंपैरेटिवली आपने बच्चों से ज़्यादा टाइम दिया, तो मतलब कि वो एरिया में कहीं ना कहीं मिसिंग है. ऑलराइट, सो इसीलिए हम कहते हैं ये प्लेटफॉर्म में आपको हर एक चीज़ जो भी चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड वो मिलेगी. कैसे मिलेगी? क्योंकि हम यहाँ पे सारा सिलेबस जो होता है स्कूल एग्जाम का कवर करते हैं. कैसे करते हैं? हमारा जो करिकुलम है वो सारा आपके स्कूल के सिलेबस के हिसाब से मैच होता है. और उसके बाद भी अगर सपोज मैम ने 10th चैप्टर पढ़ाया और हमारे पास अभी हमने वो शुरू भी नहीं करा, तो आप हमें पहले बता दो,
ठीक है ना, और उसी की हम तैयारी भी आपको पहले करा देंगे। तो वी ऑल्सो कवर सिलेबस एज पर स्कूल एग्जाम शेड्यूल। तो जैसे जैसे आपका स्कूल का एग्जाम होगा आप हमें बताओगे, हम वो वाला चैप्टर आपको प्रिपेयर भी करवाएंगे, और जब आपका वो चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा तो आप उसके एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर भी ला सकते हो, राइट। एफर्ट कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो नंबर भी आने चाहिए, राइट। यस, ये हमें पता है। तो इसीलिए हम आपके स्कूल एग्जाम से पहले वो चीज कवर करवाते हैं। एंड वी ऑल्सो हैंडल कस्टम रिक्वेस्ट। बाय सेइंग कस्टम रिक्वेस्ट इट मीन्स कि बाय in case, I'd say by chance or in case, there is a point that you want to understand something which is in next 2 classes. मैं 9th में हूँ बट मुझे 10th का टॉपिक पहले ही पढ़ना है कि मैं 10th के नंबर्स में लूज ना करूँ, मैं पहले ही पढ़ना शुरू कर दूँ। आई एम स्मार्ट इनफ, आई एम फ्यूचर प्लान कर रही हूँ। तो अगर मैं वो फ्यूचर प्लान कर रही हूँ तो मैं अपनी टीचर को बता सकती हूँ कि मैम आप मुझे वो वाला टॉपिक भी प्लीज कवर करवा दो। सो here we go, we also handle custom request। तो कोई शेड्यूल नहीं है, ऐसे प्रॉपर बुक नहीं मिलती कि भाई यही पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप बताओ आपने क्या पढ़ना है, हम वो सब कुछ आपको रेडी हैं पढ़ाने के लिए। ऑलराइट, सो इन सब पॉइंट से आई थिंक आप भी मानोगे कि हाँ सिंसियरिटी तो है, एंड वी कैन से दैट इट्स इंडियाज मोस्ट सिंसियर लर्निंग डेस्टिनेशन एंड वी टीच फ्रॉम क्लासेस 1st to 10th। यस, 1st to 10th के सारे बच्चे हैं वो जल्द से जाके ट्रायल क्लास बुक करो और ये चेक करो कि मैम सही कह रही है या नहीं। एंड यू नो व्हाट, ट्रायल क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री। तो फ्री है, चार्जेस भी नहीं है, ट्राई तो कर ही सकते हैं। यस, सो आई रिपीट द की फीचर्स वंस अगेन, ताकि जिन्होंने बाद में ज्वाइन करा अभी वीडियो उनको भी पता चल जाए कि स्विफ्लर्न प्लेटफॉर्म क्या करता है। यस, द की फीचर्स आर देयर इज अ डिटेल्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट। सो आपका एक स्टैट्स है जो अप एंड डाउन करके हमें बताता है। मैं बार बार अप एंड डाउन क्यों बोल रही हूँ, डाउन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ, गलतियां हमसे भी होती हैं। बट जब वो ग्राफ डाउन होता है, हमारी परफॉर्मेंस डाउन होती है, तो टीचर को क्या मिल जाता है, रेड अलर्ट, टन टन टन, बेल रिंगिंग। तब टीचर का काम शुरू है। उसका क्या काम है कि उसी चीज को कैसे अच्छे से और डिफरेंट वे से उसी बच्चे को समझाना है ताकि वो ग्राफ दोबारा क्या हो जाए, बढ़ने लग जाए, राइट। यस, वी ऑल्सो हैव सैट एग्जाम्स। अब सैट क्या होता है, स्विफ्लर्न एकेडमिक टेस्ट सीरीज। ये एग्जाम क्या करता है, दिस एग्जाम्स एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में बच्चे सॉल्व करते हैं। तो हमारा एंड ऑफ द डे तो हमारा कंपटीशन, या हमें पता कि हम वर्ल्ड पे कहाँ स्टैंड करते हैं, तो हमें सबके साथ करना पड़ेगा। सिर्फ स्कूल के अंदर कंपटीशन करते रहेंगे तो लिमिटेड के बच्चों के अंदर ही हम compete कर रहे हैं, राइट। उनसे ही हम अच्छा परफॉर्म करेंगे या अपनी पोजीशन देख सकते हैं। बट रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता ना। रियल लाइफ में तो इतने सारे बच्चे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कितने सारे बच्चे उसके लिए टेस्ट के लिए करते हैं, राइट। तो इसलिए ये स्विफ्लर्न एकेडमिक टेस्ट सीरीज जो होता है ये आपको हेल्प करता है कि आप अच्छा परफॉर्म करो। और आपको अगर गलत है, मे बी आपका वो परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, तो क्या करें, विल प्रोवाइड यू अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट। तो आप कीप ऑन प्रैक्टिसिंग बिकॉज वी नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, right? A woman being perfect, right? Yes. And one more big advantage at this platform क्या है, हमारे को सबको पता है कि मल्टी चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं वो कॉम्पिटिटिव के लिए होते हैं, राइट। बट स्कूल का जो एग्जाम है राइट नाउ जो करंटली हम पढ़ रहे हैं उसमें तो हमें हर एक स्टेप्स लिखने पड़ते हैं। तो सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, उसको सब्जेक्टिव बोलते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म में आपका सब्जेक्टिव टेस्ट भी करवाते हैं ताकि आपको ये पता चले कि इस क्वेश्चन के आंसर्स कैसे लिखने हैं, किस चीज़ के कितने मार्क्स डिडक्ट कर सकती है टीचर, इस चीज़ का कितना मार्क्स कैरी होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी जिससे हम बिना नोइंगली हम मार्क्स रिड्यूस लूज कर देते हैं, बेशक हमारे नंबर्स फुल आते हैं, राइट। तो इसीलिए हम ये चीज़ भी अपने प्लेटफॉर्म के बच्चों को बताते हैं ताकि वो हाफ मार्क या 1 मार्क भी हम लूज ना करें। सो एवरीवन प्लीज बुक अ ट्रायल क्लास राइट नाउ, एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के। आप वहां जाके ट्रायल क्लास बुक कर सकते हैं। एंड काइंडली सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, प्रेस ऑन द बेल आइकन। ये क्यों बोलते हैं, ताकि अब जब नेक्स्ट सेशन आएगा ना जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, यहाँ पे इतनी सारी टीचर्स हैं जो ऑलरेडी पढ़ा चुकी हैं जहाँ पे आप प्रेजेंट नहीं थे, बट नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो आपको पहले ही अलर्ट आ जाएगा कि ये टीचर ये टॉपिक लेके रेडी आ रही है। तो आपको पता है कि इस क्लास का ये वाला टॉपिक है एंड आई हैव टू बी प्रेजेंट देयर। ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर। Yes, guys? Alright, great. So let's start the topic, the compound interest without using formulas का session number 2. So we'll do some problems based on compound interest. तो अभी तक हमने फर्स्ट सेशन में क्या किया था, कौन कौन ने फर्स्ट सेशन अटेंड किया जल्दी से कमेंट करो चैट बॉक्स पे, I'll read it. Okay? और जिन्होंने नहीं अटेंड किया तो you can go back and study. We studied simple interest in that topic. ठीक है, उस सेशन में हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा कम था और हम उसको कंपेयर कर रहे थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों में कैसे डिफरेंट है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास
before actually starting, let me tell you what are the examples so that it makes clear कि compound interest कैसे calculate होता है और कैसे वो different होता है. Alright, so let it be very clear from the examples, that is, when the simple interest is compounded yearly, the principal will increase yearly. तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब भी हमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है गाइस, जब भी हमें इंटरेस्ट जो है हमें कंपाउंडेड ईयरली कैलकुलेट करना है तो प्रिंसिपल क्या होता है, इंक्रीज करता है एवरी ईयर. तो इंटरेस्ट जो इंक्रीज कैसे करेगा, ईयरली इंक्रीज करेगा, क्योंकि हम ईयर के अंदर उसका कैलकुलेट कर रहे हैं. ऑलराइट, जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं इट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली. हाफ ईयरली मतलब एक ईयर को हम हाफ डिवाइड कर रहे हैं. मतलब अगर एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, सिंपल 12 मंथ्स, उसको हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या आ गया, 6 मंथ्स. सो हम एवरी 6 मंथ्स के बाद जो प्रिंसिपल है वो इंक्रीज कर जाएगा. एज सिंपल एज दैट. ऑलराइट, तो क्या मतलब है, कंपाउंडेड ईयरली मतलब कि प्रिंसिपल सिर्फ एक ही बार ईयर में इंक्रीज करेगा. बट व्हेन कमिंग टू कंपाउंडेड हाफ ईयरली, प्रिंसिपल विल इंक्रीज आफ्टर 6 months. दैट्स राइट. एंड द पीरियड आफ्टर विच द प्रिंसिपल चेंजेस इज नोन एज कन्वर्जन पीरियड. तो जिस प्रिंसिपल जिस अमाउंट पे चेंज होता है, जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कन्वर्जन पीरियड. ऑलराइट, ओके. सो some more about compound interest क्या है, the same principal and the same rate of interest is compounded annually. So compound interest for the second year will always be more than the first year. इसके कहने का मतलब क्या है, let us understand कि हम क्या कहना चाह रहे हैं. We are saying that the same principal और same rate of interest है, but compounded क्या है, yearly है, पूरे year के बाद होगा. Alright guys, तो हमारा जो second year का interest क्या होगा, वो ज्यादा होगा. कैसे होगा ज्यादा, कैन एनीवन थिंक कि हमारा क्यों इंटरेस्ट बढ़ रहा है. रेट इंटरेस्ट सेम है, प्रिंसिपल सेम था जो पहले था, बट अब इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का फर्स्ट ईयर से ज्यादा क्यों है. व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट, कैन एनीवन टेल मी. यस, कैन आई सी दैट, व्हाट्स योर आंसर, यू कैन राइट इन द चैट्स, आई विल गेट टू नो. यस, सो क्या है रीजन. Yes guys, the reason is क्योंकि उससे पहले जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं, उससे पहले हम प्रिंसिपल अमाउंट को इंक्रीज कर देते हैं. कैसे, जो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल होता है, इसको मैं P1 लिख रही हूँ, प्लस जो हमारा कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर आता है, उन दोनों को ऐड करके हम नया प्रिंसिपल बनाते हैं, दैट इज P2. अब P2 के वैल्यू पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, रेट बेशक सेम हो. राइट, उसके बाद उसी को ही जब हम थर्ड ईयर में ऐड करेंगे तो हमारे पास थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, दैट इज मोर देन द सेकेंड ईयर. तो ऐसे हमारा हर ईयर का जो इंटरेस्ट आता है वो पहले प्रीवियस ईयर से नेक्स्ट ईयर का हमेशा ज्यादा होता है. क्लियर गाइस, ओके, डोंट वरी, विल डू द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा. ऑलराइट, द सेकेंड वन इज ऑन द सेम प्रिंसिपल. सेम प्रिंसिपल की बात करें और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, बट अगर इट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ्स के बाद होगा तो क्या होगा. यस गाइस, तो सेकेंड हाफ का ज्यादा होगा फर्स्ट हाफ से, क्योंकि हम 6 मंथ्स के बाद ऐड कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ज्यादा होगा. वैसे ही थर्ड हाफ ईयर मतलब कि पूरा ईयर के बाद जो थर्ड हाफ ईयर की बात करते हैं वो ज्यादा होगा सेकेंड हाफ ईयर से. सिंपल लॉजिक, जब हमारा ऑटोमेटिकली उसको ऐड करते हैं तो प्रिंसिपल बनता है ना, तो प्रिंसिपल बढ़ रहा है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, नेक्स्ट अमाउंट के लिए, नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है इंटरेस्ट वो भी इंक्रीज होगा. ऑलराइट, ओके, moving on to the third point that says the difference between the compound interest. What is it saying? The difference between, difference मतलब अगर हम subtract करते हैं, so the difference between the compound interest of the two consecutive conversions, half yearly हो या yearly हो, उसका मतलब नहीं है. ओके, सो इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द प्रीसीडिंग कन्वर्जन पीरियड. तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक ईयर का हम प्रिंसिपल अमाउंट लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल को कंसिडर करके मैं बताती हूँ, इज 700 and 750 आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव ईयर्स. तो फर्स्ट ईयर में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 700 आया, सेकेंड ईयर में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 750 आया. डिफरेंस क्या है, 50 रुपीज. तो मेरा नेक्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट कितना बढ़ा था एक ईयर में, 50 रुपीज. ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट बाय सब्ट्रैक्टिंग 750 minus 700 and we got 50 rupees as an interest for the amount of the interest of a year, that is 700.
ऑलराइट, सो 700 में फर्स्ट ईयर जो हमारा अमाउंट का था वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया, दूसरे में 750 आया, तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करके हमें पता चल रहा है कि हमारा 50 रुपीज ज्यादा इंटरेस्ट आया कंपेयर टू द फर्स्ट वन। तो ऐसे हमारे को ये पता चल सकता है कि किस ईयर में हमारा कितना इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है। ऑलराइट गाइस, okay, so the problems on compound interest. So let's start the questions and let's start how to solve these questions. So first question I'll do it, and the next one I want all of you there understand these questions. How am I solving? What are we actually doing? And from the next question on, you can tell me how to proceed. All right, so let's go. All right, so let's read the question first. The question says that 8,000 rupees is borrowed, that is taken at 5% compound interest per year for 2 years. तो हमारे को क्या पता है? Principal पता है. This is what is it? This is principal. So we know principal is 8,000 rupees. All right. Now the rate of interest is also given to it, that is 5%, and the year, that is 1 year, we will calculate first. कितने years के लिए actually calculate करना है total? Total we have to calculate for 2 years. But for the compound interest पहले हम first year का निकालेंगे, उसके बाद जो हमारा इंटरेस्ट आएगा उसको हम ऐड करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट में, फिर हम सेकेंड ईयर का निकालेंगे एंड देन विल गेट टू नो द फाइनल अमाउंट. ऑलराइट, सो लेट्स सी हाउ डू वी प्रोसीड. प्रिंसिपल हमारे को पता है, रेट हमें पता है, बट टाइम विल टेक 1 ईयर फर्स्ट. ऑलराइट, 2 years टोटल निकालना है, तो बट हम फर्स्ट 1 ईयर का निकालेंगे. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट? हम वो ही यूज करेंगे बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग द कंपाउंडेड इंटरेस्ट फॉर्मूला. That's the topic, right? Compound interest निकालना है without using its formula. So that is how we'll do it. We'll use the formula of simple interest and go and get the answer for the how do we calculate the compound interest. All right. So P into R into T by 100. This is the formula. We know it. So now in this case, when we know this, we know 8,000 is the principal. 5% is the rate of interest, and 1 year we have to calculate. On solving, we got interest as rupees 400. All right. On doing that, what will happen now? I got the interest. अब मेरा principal amount क्या हो रहा है? The next amount, जिस amount पे मैंने principal लिया था, we will add the simple interest. Now on adding that, I'll get the new amount, right? Principal plus simple interest. So इससे add करके अब मेरा amount जो है principal क्या है? 8,400 हो गया. अब मेरा चेंज हो चुका है. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर विल वर्क एज अ प्रिंसिपल ऑफ द सेकेंड ईयर. ये हमने पढ़ा था, राइट? क्या पढ़ा है? जो हमारा टोटल अमाउंट होगा उसी को ही कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं? प्रिंसिपल बनाते हैं, और उसके ऊपर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट ईयर का, राइट? सो अब सेकेंड ईयर का क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल वो होगा जो हमारा फर्स्ट ईयर का लास्ट अमाउंट कैलकुलेट हुआ था, दैट वाज 8,400. कैन यू सी दैट? यस. और रेट कितना है? 5%. टाइम अब हमें क्या कर रहे हैं? पहले हमने 1 ईयर का ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, 1 ईयर का दोबारा करके इट बिकम्स 2 years नाउ. ठीक है. अब मेरे पास इसको हमने 1 ईयर से ही करेंगे, क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ 1 ईयर का पहले कैलकुलेट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, और फिर दोबारा ऐड करके उसको प्रिंसिपल बनाते हैं, फिर उस पर इंटरेस्ट दोबारा कैलकुलेट करते हैं, और फिर ऐड करके हमें फाइनल अमाउंट पता चलेगा इन केस ऑफ 2 years. सो हमारे पास क्या आया? अब टोटल इंटरेस्ट आ गया 420. ऑलराइट, पहले वाले में आया था 400, अब आया 420. अब क्या करेंगे हम? 8,400 से 420 को ऐड करेंगे, then we'll get to know the amount for the second year, that is 880. Clear? अभी तक इतना समझ आया guys? Yes, now it's easy. हमारे को फर्स्ट ईयर का अमाउंट मिल गया, उसी पे ही हमने प्रिंसिपल बनाया, क्योंकि दैट इज द डेफिनेशन. कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब यही होता है कि जो हमारा फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होगा उसको हम प्रिंसिपल बना के दोबारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. ऑलराइट, फिर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करा, उसको फिर ऐड करके अमाउंट पता चल गया. अमाउंट ऑफ द सेकेंड ईयर भी हमारे पास मिल गया. बट नाउ वो हमसे क्या मांग रहा है? वो हमसे ये मांग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ कितना है. So there are 2 ways of calculating compound interest. See, now I'll teach you both the ways. All right? So now listen to it. What are they? So there are 2 ways to calculate. So first way जो हमने पढ़ा था, that is to calculate compound interest. जो फाइनल अमाउंट आया ना आफ्टर 2 years, सेकेंड ईयर का जो फाइनल अमाउंट आया, उसमें से हम माइनस कर देते हैं जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था, जो फर्स्ट ईयर पे जिसपे हम कैलकुलेट कर रहे थे इंटरेस्ट. राइट?
सेकेंड ईयर का टोटल अमाउंट माइनस द फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल था। तो उसको जब हमने 8,820 माइनस रुपीज 8,000 करा, वी गॉट रुपीज 820. दिस इज द वन वे ऑफ कैलकुलेटिंग. ऑलराइट, नाउ आई विल टेल यू सेकंड वे. अगर कभी कभार हमें नहीं याद रहता कि मैम ने क्या बोला था, तो सेकंड वे बहुत ही इजी है. आई विल टेल यू दैट. सेकंड क्या है, वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years. कैसे? जो हमने फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकाला था, 400, राइट? सेकेंड ईयर का क्या निकला है, 420. जो हमने इंटरेस्ट निकाला है P into 1 to T by 100, बस उन दोनों को हम ऐड कर देंगे and we'll get the amount 820. So this is the second way. You want, you can choose the first one. You want, you can choose the second one. That's your choice. ठीक है. हमें जब वो क्वेश्चन में इजी वे अगर मैं बताऊं, अगर वो जब भी हमसे अमाउंट पूछेगा तो हमें अमाउंट तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, राइट? और हमारे को फर्स्ट अमाउंट, पहली प्रिंसिपल अमाउंट तो पता ही होता है, तो हम सब्ट्रैक्ट करके इजीली निकाल सकते हैं. बट अगर इन केस हमसे अमाउंट नहीं पूछ रहा है तो हम अमाउंट कैलकुलेट करें क्यों, राइट? तो उस केस में हम सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं. नाउ यू सी व्हाई इट इज डिफरेंट. व्हाई आर वी टेलिंग यू दैट कम टू द स्विफ्टलर्न प्लेटफॉर्म? बिकॉज नाउ आई हैव टोल्ड यू. पहले मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, उसके बाद मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि कौन सा तरीका ज्यादा किस वे में बेटर है, ताकि आपको ये समझ आ सके कि आप पेपर के टाइम पे कहाँ पर अपना टाइम 1 या 2 minutes भी सेव कर सकते हैं. Because you're writing the statement, you're giving the answers. So for that, when you're writing a statement and giving the answers and you're solving it, you are taking more time. So that is what this platform is all about. Guys, you go and please subscribe to the YouTube channel. There are so many good teachers which are coming here right now and giving you the sessions, telling you how to do the things, right? You can have that alert beforehand, you can join that time. तो आपको पहले ही अलर्ट आ जाएगा कि ये टॉपिक पर आने वाले हैं, तो आप फ्री रह के यहाँ पर भी हमसे वो चीजें पढ़ सकते हो, राइट? और इफ नॉट, यू कैन गो एंड बुक अ ट्रायल क्लास और वहां पे भी चेक कर सकते हो कि एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म बाकी प्लेटफॉर्म से कैसे डिफरेंट है. Alright, so let's move back to the topic that says कि हमारे को कैसे निकालना चाहिए इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट हम दो तरीके से निकाल सकते हैं. एक तो सेकेंड ईयर से फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल को माइनस कर, सेकेंड इज कि दोनों के इंटरेस्ट को ऐड कर. तो दैट डिपेंड्स कि क्वेश्चन में अगर अमाउंट नहीं मांगा तो हम अमाउंट निकालें ही क्यों, हम डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं इंटरेस्ट और तब बता देते हैं. तो दैट इज योर चॉइस, आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं. ऑलराइट, ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड question that says calculate the compound interest that is due for 1/2 years on rupees 6,000 at 10% compounded annually. All right, so now this I want you guys to solve and give me the answers. If not, then I'll help you out. All right, so let's see who can do it. I can see you all there. Hi guys, are you there? Are you understanding? So give me the answers so that I know you are there or not. All right, so let's start the topic. So first question कहता है कि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट हमें दिया हुआ है, राइट? सो आई नो द प्रिंसिपल नाउ इज 6,000 rupees. Remember to add that. All right. Now rate is given to me. Rate in percentage is given to me 10, right? And the time is given to me. Time is given to me 1/2 years. अब इसका क्या मतलब है 1/2 years? बताओ, कोई बता सकता है इसको कैसे करेंगे? Yes guys, who can tell me how we will solve this question? Now what I have to do is I have to find compound interest. Simple interest होता तो मैं इसको fractions में convert करती time को और simple multiply करके interest बता देती. Logic simple. But question तो क्या है, compound interest का है. तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर का, फिर निकालना पड़ेगा सेकेंड ईयर का, फिर निकालना पड़ेगा 6 months का. All right, so now this question will have 3 steps, 3 methods to solve. 3 years का अलग अलग, मतलब 1 year, half year का अलग अलग निकालना पड़ेगा. All right, so let's see how do we begin. First क्या होता है, हमारे को first compound interest अगर निकालना है फर्स्ट ईयर का, that means 6,000 into rate of interest, that is 10, into time is 1/100. That's right, क्योंकि 1 year का निकाल रहे हैं. So what do I get? I get rupees 600. All right, now I got that it's rupees 600. अब मुझे क्या करना है, what is the next step guys? Who can tell me? Compound interest निकल गया, मैं क्या निकालूं? Yes, that's right, I have to calculate the amount. Amount क्या होता है, principal plus जो compound interest हमने calculate किया. Yes guys, okay. Principal is 6,000, very good. Compound interest 600, well done. Now what do I get? 6,600 as the amount,
right, for the second year. Now, what is the principal when I need to calculate the compound interest on the second year? That means it's the amount of the, जो मेरे पास amount है, that is 6,600 into 10 by 100 into time, that is 1, क्योंकि मेरे को 1 year का ही निकालना है. Now, what do I get? I get 660 rupees. That's right. So, second year का compound interest क्या हो गया? 660. All right. Now, I need to again calculate the amount. Right? Amount क्या होगा second year का? Anyone who can tell me? Yes, guys. Have you got that? What's the amount? 6,600. That was before principal plus 660. That comes out to be 6027. So, rupees 7,260 is the amount for second year. All right. Now, what do I have to do? Now, I have to again calculate the interest. But for how much time? 3 years. Third year, पूरा 1 year का निकालना है? No. कितना निकालना है? Half year. That means 6 months. तो उस हाफ ईयर को हम कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड ईयर तो हाफ मंथ है, मतलब हाफ ईयर का जो हमें निकालना है, जो 2.5 year बनेगा, that will be 7,620 into 10. अब मैं टाइम बताती हूँ कैसे करना है. टाइम जो होता है हमेशा हम ईयरली ही कैलकुलेट करते हैं. 1 year, that is 6 by 12. So I'll multiply by 6 by 12. क्यों? क्योंकि 1 year है, बट हमें चाहिए हाफ ईयर, एंड हाफ ईयर मीन्स 6 months, और मंथ्स को जब हमें करना होता है ईयर में तो विल डिवाइड बाय 12. राइट गाइज? Okay, so on solving, what do you get the answer? Can anyone give me the answer on solving? What do you get it? All right, so let's do it. 0 and 0 gets cancelled. This and this gets cancelled. Now on solving, what do you get? Yes, guys, anyone who knows the answer? Yes, you will get rupees 363. All right, so now you got that. Now what is the final amount you want? You can calculate that. But is that asked in the question? Do I really need to calculate? No. What are they asking? They are asking the total compound interest. So compound interest, अब मेरे को बिना amount निकाले भी कर सकती हूँ. Right? What will I do? I'll add the 3 interests. So 600 plus 660 plus 363. So what do you get? 600 plus 660 plus 333. So what's the answer? Let's see. Anyone who knows what's the answer on doing it? Yes, so let's do it. 600, 660 plus 323. So what do I get? 3, 8, and what is it? Guys, is it? Oh, I'm so sorry. I think I've taken it wrong. Let me go back and see that. Just a second. So what are we going to do now? We need to calculate that. So we were having the compound interest at 600, then it was 660, and then it was 363. Yeah, that's right. So now what is the total interest? Yes, guys, on adding 636. All right, so that was the amount. 600, 660, and 363. So 3, 2, and that comes out to be 10. So 1,023 is the amount. So let's see, is that right? Yeah, is it or is it not? No? Why is it not right? Because we did some error. Yes, of course. So what was the error? In the addition. All right, so that was the error in the addition. So we had to take 6 plus 6, 12, 1 carry, and that comes out to be 662. I'm so sorry. I did not realize I have to carry over. So that's a mistake. All right. Okay, now coming on to the next one, it says that we have to calculate the amount and the compound interest on 10,000 for 1 year at 8% per annum compounded half yearly. So now in this question, what is it saying? We need to calculate the compound interest and the principal amount is given to us. That is 10,000. All right, for 1 year. So that is given to us. That is for 1 year. Now we have to compound it half yearly. ये 1 year का दिया हुआ rate of interest. That is 8%. Right, so rate is 8%, principal is 10,000 and we have to compound it half yearly. मतलब क्या है कि 1 year की बात कर रहे हैं, but हम कितनी बारी calculate करेंगे guys? 2 times after every 6 months. So हमें 2 times calculate करना है. All right, I hope is it clear? Yes.
So let's calculate. Anyone who knows how to do it can give me the answers in the chat. Who's very quick, who's quicker than me can give me the answers. Otherwise, I'm taking my speed and doing it and telling you how to do with steps so that you can also understand. Okay. So first of all, हमें क्या निकालना पड़ेगा? Compound interest निकालना पड़ेगा first half का. All right. So what will be the compound interest for the first half? That is same as the simple interest that we actually calculate. So that is 10,000 into, what is it? 8%. Into, I'll do 6 by 12, right? Because I have to calculate for half yearly. So it's 6 by 12. So on solving this, what will you get? So let's solve it actually and see. So 0 and 0 gets cancelled, right? This gets cancelled 2 and this becomes 5. So this comes up to be rupees 400. I hope this is clear. If not, then I'll write it again. It's rupees 400. All right. So here I got the compound interest for the first half year. Half yearly, so first half of the year. Now what will I do? Similarly, the same step, I'll find out the amount, that is principal plus compound interest that was calculated. So that becomes 10,000 plus 400. So that becomes to be 10,400. Pretty easy. I can write rupees at the end as well. So it is what that I got the amount. Now, what is the amount becomes the principal for the second year, second quarter, like second half yearly, right? So now in that case, now what will happen? The compound interest for the second half yearly, right? That is principal amount will be 10,400 into rate of interest would be 8 into 6 by 12 because it is half yearly. Now, similarly, same 0 gets cancelled. This becomes 2. That becomes, on solving, you will get rupees 406. This is what is the compound interest. Now, what are the two things asked from us? One thing that is asked, that is amount. And second thing that is asked, that is compound interest. So, what can I do? Now they want amount, so I need to calculate the amount that is there after half yearly. That becomes out to be the principal that was before. So what was the principal before? 10,400 plus 416, which is the interest which was just calculated. So what's the answer? 10,816. So this is the rupees of the amount. Now how do we calculate the compound interest? तो एक तरीका तो मैंने बता दिया था कि दोनों को ऐड कर लो. The second क्या है? Let's subtract. So now I'll tell you the second method. Okay, we'll do that in this question. So now what is the second method? Let me erase it and then come back. The second method is 8,106. That was the amount minus the principal of the initial. Like जो हमने starting में करा था. Initial में. So that was 10,000. So on solving, I get 806. And that is the compound interest. That is total. Alright. So let's see. Have we got the right answer this time? Yes, so that is 816. Okay. Alright guys. So do you know that the thought of the origination of the compound interest was done in Italy? Did anyone tell you that? No, we never knew that, right? So that is what this platform is. We'll always come with the great exciting news which is not told you, and why has it come and what has it actually meant that time. क्यों invent हुआ और उसका क्या meaning था? So actually that was invented in 17th century in Italy. That says the compound interest. And what was the thought behind it? The thought was कि जो interest आ रहा है हम उसके ऊपर भी interest क्यों नहीं दे? Right? वो भी तो एक amount है जो हम reserve कर देते हैं. तो उसके ऊपर interest क्यों नहीं? So this was the way in which the person was thinking कि मैं और money कैसे increase कर सकता हूँ. So to make it the sum grow faster than the simple interest. Simply calculate करके उसको कर रहा हूँ, but मैं amount वो भी तो रख रहा हूँ, वो interest भी तो उसी में रह रहा है next year का. तो उस पे कितना rate of interest होगा? This is how we compounded. Compound interest came into existence. All right. So this is what is happening. That is a better way. If someone says that you want to invest in a compound interest way, so obviously you should choose that if you have a long period commitment that you will not take it out, because in that way you are earning more. तो आपकी calculation में principal amount भी बढ़ी जा रहा है और उस amount पे भी interest आता रहता है. All right, guys. So a practical way and to choose what to choose in simple interest or compound interest. So when you're getting money,
then you can choose compound interest. But when you have to give, then you should choose simple interest. So kam dena padega, right? Smarter way. All right. Now let's start with the questions and the subjective questions and quizzes. Everyone excited? After doing that, having a note, let's start the quiz. Excited for today? All right, so here we go, the concept-based questions. The first one, find the simple interest and state the amount when the principal is 6,400, the rate of interest is 6% and time is 2 years. So who can do that? Anyone who can do it quickly? Yes, guys, I need the answer. I need the principal amount is given to me, rate is given to me, time is given to me, and I just need to calculate the compound interest. So who can do that for me? Yes, let's see. So what it says, simple interest, what's the formula? P into R into T by 100. Right? So what's the principal amount? It's given to us 6,400 to be multiplied by 6, that is rate of interest, into time is 2 by 100. So what's the answer now, guys? Can anyone tell me? So on solving this, what will you get? Yes, I can see you guys there. You can comment even if it's wrong. It hardly makes a difference, guys. हम पढ़ने ही तो आए हैं. गलत भी हुआ तो क्या problem है, right? Yes. So now simple, we'll cancel the 2 zeros. We got 64 into 12. So let's make it more simplified. 64 into 12. On multiplying, what you get? You get 768 rupees. So this is what? This is the simple interest. And they also want to know the amount. To state the amount. Amount क्या होगा इसमें? Simple amount will be principal plus interest. So that is 6,400 plus 768. So on adding, you'll get 7,600. 168 rupees. All right. So let's see, is that the right answer or not? Let's see that. Or have we done again a mistake? No, that's right. Superb. Okay. Moving on to the next one. You have to, this time the question is changed. Now what is given? The simple interest is given to us, but we need to calculate the time. अब कैसे करेंगे मैम? ये तो आपने कोई question सिखाया ही नहीं. Guys, this is what the variety of question is. आपको principal amount, principal, rate, time और interest 4 चीजों के अंदर deal करना है. तो questions ऐसे ही बनेंगे simple interest कि आपको 3 चीज दी होगी, 4th निकालनी होगी. Alright, and you just have that formula. उसमें substitute करो, उसकी value देखो और answer ले लो. Alright, so in this case, we'll first write. Now I'll teach you how to write a subjective question in this particular question, and later on we'll proceed quicker. Alright, so just understand what are the steps and how should we write it. So this is also important that we say it. इस platform पे हम सिखाते हैं. So let's see how do we teach. Alright, the first thing what is asked? Time पूछ रहे हैं. तो हमें time ही निकालना, right? यही निकालना होगा ना. So let's say let the time be t. Alright, तो मैंने क्या करा? Time को capital T से mark कर दिया. Now what will happen? Now when I say that time is t, I know what's the formula for simple interest. Simple interest is p into r into t by 100. Yes, I know it or not? Yes, guys, do I know this or not? Yes. Now substitute the value. You know the principal, you know the rate, you know the simple interest. So you just need to find out the time. So guys, come on, quickly do it. Let's solve. Let's see who can give me the answer. So just put the values of principal, that is 6,400, and then put the value of rate, that is 6%, and then put the values of interest, that is given to us 1,152. All right. So now on that, what will you get? You will get the values of the time, and the time is you need to calculate. So let's do that quickly. Okay. So 6,400 into 6 into t by 100 is equals to, that was a simple interest, that is given 1,152. All right. So here you got that. Yes. So on solving, what do you get? You will just cancel the zeros here. Okay. So now it becomes time is equals to 1152 divided by 6. Right or not? Yes, this is what you're getting, guys. Yeah. On solving, what do you get?
Yes, what do you get on solving it? Let's see who can get that. And you'll divide it by 6, multiply by 64, because this is on 64 is also there. So on doing that, you'll get time is equals to, on solving you get time is equals to 3 years. Okay, so let's see who can give me the answer now. Yes, that is the right answer. The time is 3 years. All right. Now moving on to the next one, the difference between the simple interest and a compound interest of a certain amount. Now the problem comes. Ye wala question is very favorite for the school teachers. So guys, just remember that this question is very favorite, and these are the things that generally teachers ask you. All right, so let's see how it is favorite. Because in this topic, it's asking simple interest as well as compound interest. So dono cheeze use kar. All right, so it's saying the difference between दोनों का difference, compound interest और simple interest का difference is given to us, that is 48 rupees. The rate of interest is given to me, that is 20%. And the time is given to me, time is equals to 2 years. All right. What do I need to calculate? I need to calculate the principal amount. What I need to do is, I need to calculate the principal amount. Principal कैसे निकालने? तो let principal, right, I'll write it. Let principal be capital P. Now, simple interest और compound interest दोनों की बात हो रही है, तो means हमें दोनों तो निकालना ही पड़ेंगे. As simple as that? Yes. So, simple interest is equals to P into R into T by 100. This we know it, right? So, on solving this value, I'll get simple interest as, what is it? P into R, that is 20, into time, that is 2 by 100. On solving that, what do I get? I get the value as 0, and 0 gets cancelled. So that is, okay, I'll put it this 5. So that is 2 by 5 of P. Let this be in terms of P only. Because principal तो हमें पता ही, right? यही तो हमें निकालना है. So let it be in terms of P. All right. Now what do they want? They want us to calculate the compound interest also. So let's do that. Compound interest कितने years के लिए मांग रहे हैं हमसे? Yes, can anyone tell me compound interest कितने years के लिए मांग रहे हैं? Yes, what do you think it is? Compound interest they are asking for 2 years. ये भी 2 years के लिए था, but हम directly simple interest में time को 2 से multiply कर सकते थे. But compound interest में क्या हम directly multiply कर सकते हैं? No. So for this, what do we have to do is, we will find out the compound interest of the first year. That will be P into rate of interest, that was 20, into time will remain 1 by 100. So what does that become? That becomes 1 by 5 of P. That's right. Sure. ये है हमारा amount. Okay. Now coming on to the second one. अब इसके बाद हमारा step क्या होता है? Amount calculate करना. So what was the previous amount? That was just P plus 1 by 5 of P, जो कि हमारा इस time interest आया है. Right? अब इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या कर सकते हैं? सिंपल एलसीएम ले लेते हैं. 5 plus 1, ठीक है, 5p plus 1p. That comes out to be 6p by 5. अब now this amount becomes a principal for the second year. All right, so let's do that. Compound interest for the second year. That becomes 6p by 5 into 20 by 100 into 1. This is what that is. So on solving, let's solve it. So let me change the color so that I can show you how I'm solving. So this gets cancelled. This becomes 5. So that comes out to be 6p by 25. Got the answer? Right? So this is what? This is the compound interest for the second year. All right. Now what was it saying? That the difference between the compound interest, not the amount. तो हम क्या करेंगे? अब इन दोनों compound interest को क्या करेंगे? हम add कर देंगे, right? That is what we'll do. So the total compound interest will be 1 by 5, that was there, plus 6 by 25. Let me take P at the outside. Directly P भी ले सकते हैं, but P outside करेंगे तो भी कोई problem नहीं, क्योंकि common हम ले सकते हैं, right? So in that case, when I have to make the denominator same, so that will be 5 plus 6 into P. That's right. That becomes 11 by 25 of P.
Now on solving this, what do I get? I know this is the compound interest. And what was the simple interest calculated before? That was 2/5p. Now the question says difference between. तो इन दोनों को क्या कर देते हैं? Let's subtract. So on subtracting, what do I get? What do I get? I'll get the principal amount that is given to me. How will I do it? See. Now the compound interest minus simple interest that was given. Compound interest came out to be 11/25p minus simple interest that was 2/5p. That's right. Now I know this value is what? What is this value? This is 48 is equals to, अब इसको simplify कर लेते हैं. P common ले लेते हैं as जब हम हमेशा लेते हैं. 11 minus 10/25. आई होप आपको ये डायरेक्टली आ गया हो. अगर नहीं आया तो सिंपल मैंने क्या किया है, इसको 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए. सो नाउ P इज इक्वल्स टू 48 इंटू 25/1. क्योंकि ऊपर को सॉल्व करेंगे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P 1/25. राइट, इस सिर्फ राइट हैंड साइड को. अब इधर हम 25 को ले जाएंगे एंड देन विल गेट द वैल्यू ऑफ P. All right. So what's the value of P now? So P is equals to rupees 1200. That's right. Superb. All right. Let's see. Have we got the right answer? Yes, that's right. All right. Let's move to the next one. Quickly, let's see who can give me the answer. There are 60% increase in the amount of 6 years at a simple interest. What will be the compound interest of 12,000 after 3 years at the same rate percent? So what is happening? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैम हम आप कहोगे हमारे को दोनों चीजें नहीं दी हुई, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया और हमारे को प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं दिया. दिया प्रिंसिपल दिया कि नहीं दिया? दिया. ओके, लेट्स सी हाउ. फर्स्ट वाले में हमारे को जब वो सिंपल इंटरेस्ट के लिए बोल रहा है तो ना उसने हमारे को ये दिया है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या है. राइट, और हमारे को ये बोल रहा है कि जो हमारा अमाउंट था वो 60% इंक्रीज कर. बाय सेइंग दैट व्हाट डज इट मीन कि अगर मैं सपोज करती हूँ कि लेट मेरा प्रिंसिपल अमाउंट P था, राइट, 60% मेरा इंक्रीज करा, मतलब 60% ऑफ P था वो, तो दैट बिकेम माय इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट ये बना होगा. सो नाउ आई पुट दिस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाय 100, जिसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट व्हाट विल आई पुट? आई विल पुट 60/100 ऑफ P which is equals to प्रिंसिपल एक ही रखते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे निकालना है तो लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी R, और टाइम कितना दिया हुआ है? 6 years, so 6/100. So on solving this what will I get? P से P कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 6, अब R क्या आ जाएगा हमारे पास? R will be 60/6. That comes out to be 10%. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन से 10% आ गया. Now I have to use this 10% and find out the compound interest for the after 3 years. So now simple, I think you guys can do it and give me the answers in the chat box that you will do it. If not, then I'll do it in the next one. करना क्या है? Let me tell you the steps. बहुत easy है. Rate of interest अब हमारे को मिल गया. Principal हमारे पास है, that is 12,000. Rate that is 10%, और time जो है हमारे पास 3 years का है. तो सिमिलरली पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, ईयर को 1 रख के, उसके बाद जो इंटरेस्ट आएगा उसको प्रिंसिपल अमाउंट में अमाउंट बनाएंगे प्रिंसिपल ऐड करके, फिर नेक्स्ट ईयर का वो प्रिंसिपल बन जाएगा एंड देन सिमिलरली विल कैलकुलेट एंड लेटर ऑन विल डू दैट अगेन. तो उसके बाद थर्ड ईयर का दोबारा निकालना पड़ेगा, तो उसमें सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड करेंगे एंड देन विल गेट द थर्ड ईयर. हाय पूजा, आई एम सो सॉरी यू केम सो लेट. आई होप यू वर नोटेड और नॉट. मेरे को लग रहा है आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तभी आपको नहीं पता चला है, राइट? सो दिस इज व्हाट आई टेल यू गाइस, गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. अभी से अभी जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, ताकि जब ये नेक्स्ट वीडियो आए तो यू आर प्रेजेंट देयर. ऑलराइट, okay. So on solving this, you'll get the value of the compound interest, that is 3,972. So guys, please hold on, solve this question. In case you have any doubt, you don't know how to solve it, just give me in the chat box or in the comments. Even if I'm not live, you can give me in the comments that I'm not able to solve it. I'll give you those answers. Don't worry, okay? We are there for you. We'll come with the same question in the next class, but if you'll tell me before, अगर दूसरे सेशन से पहले बता दोगे तभी. In case if not, then we'll try to help you in the comments itself, okay? All right, now moving on to next one. Let's see who can do it.
So the compound interest for the principal amount is given to me, that is 30,000. Rate of interest is 7% and it's compounded and interest निकालना है और interest हमारे को दिया हुआ है. So in this case, what it's saying, the compound interest is this. So I know the compound interest is rupees 4,347. I know the principal is 30,000 rupees, right? I know the rate is 7%. But what do I need to calculate? I need to calculate the time. अब time कैसे निकालेंगे? Anyone who knows कैसे निकालेंगे? Yes? See, that's very easy. बहुत easy है. क्या करना है? Time को T ले लेते हैं. जो चीज़ निकालनी होती है उसको उसका alphabet ले लेते हैं. Simple. Time को हमने ले लिया T. Now time is T. Now what do I have to do? I have to find out the compound interest. तो हमारे को कितने years के लिए निकालना है? तो हम क्या करेंगे? पहले फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे. ठीक है, निकाला. उसके बाद हम अमाउंट बना के सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल लेंगे. ठीक है, अब क्या करेंगे, जब हमारे पास दो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गए या फिर पहले कोई हम चेक करेंगे कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट इतना आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हम सेकेंड भी निकालेंगे. सेकेंड को निकाला, फिर ऐड करके देखेंगे कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है या नहीं. अगर तो होगा तो हमारा टाइम क्या हो गया, 2 years. बट अगर वो नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, उसमें दोबारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे और फिर ट्राई करेंगे कि वो इतने इक्वल आ रहा है ऐड करके या नहीं. जितने ईयर्स में जब तक ये सम टोटल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का इतना आएगा तो मतलब टाइम उतना हो जाएगा. ऑलराइट, सो गाइस जस्ट पॉज द वीडियो राइट नाउ और जो मैंने अभी आपको बताया उसको वैसे वैसे सॉल्व करो और देखो आंसर क्या है. एंड आई होप यू विल बी एबल टू डू इट एंड द आंसर विल बी 2 years. तो 2 years के बाद ही आ जाएगा. Okay, simple. All right, moving on. Calculate the difference between compound interest and the simple interest on amount is given to us and time is given to us. So how will you do it? Anyone who can tell me? Yes, कैसे करेंगे? डिफरेंस निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का. तो पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, सबसे इजी है ना. 2 years का सिंपल 2 पुट कर लेते हैं और सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है. राइट, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करना पड़ता है, हमारा वर्क थोड़ा सा लंबा हो जाता है, थोड़ा बड़ा प्रोसीजर हो जाता है. क्या होता है, पहले हमें 1 year का निकालना पड़ता है, फिर उसका जो आता है उसको अमाउंट में ऐड करके, प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड करके अमाउंट निकालते हैं, फिर उसको नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बनाते हैं, फिर उसके अंदर वही स्टेप करते हैं नेक्स्ट ईयर का, फिर हमारे पास आ जाता है. अब जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, हम उन दोनों को ऐड करेंगे और उससे हम निकाल लेंगे डिवाइड माइनस करके सिंपल इंटरेस्ट से और हमारा आंसर हो जाएगा. ओके, सो नाउ this is what the process is. I've told you. If you don't know, you can solve it still again, and anyone who is able to solve it right now and can give me the answer. Yes, what is it? Yes, the answer will be 25 rupees and 60 पैसा. तो ये पॉइंट्स में आएगा. अगर आ रहा होगा तो प्लीज हेजिटेट या डरना मत कि मैम मेरा तो पॉइंट्स में आ रहा है. या द आंसर इज इन पॉइंट्स. यू विल गेट इट 25 rupees and 60 पैसा. And the same way that I tell you, if you are not able to do it, kindly comment in the chat box or in the comments after when you are not watching it live. So we'll come with this in the next session all together. All right, so that's it for today, guys. We were able to complete some of the questions, and thank you so much for being connected with me at the platform Swiflearn. And whoever who has joined right now, I can see some of you are joining here, and you would be feeling कि हमने इतना late miss कर दिया, हमने तो पढ़ा ही नहीं मैम से, right? So for those children, kindly go and subscribe to the YouTube channel. Press on the bell icon so that you don't miss the update. Guys, I'm here to teach you, right? मैं आपको पढ़ाने आती हूँ, अगर आप नहीं होते तो कनेक्शन कैसे होगा, कैसे मजा आएगा? So just be present there. So subscribe to the channel, press on the bell icon so that we can understand it more easily and all together are different. All right, guys. Till then, take care and